श्रीहनुमत्कवचं श्रीरामदास उवाच। एकदा सुखमासीनं शङ्करं लोकशङ्करं पप्रच्छ गिरिजाकान्तं कर्पूरधवलं शिवं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश लोकनाथ जगत्प्रभो, शोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेद्ध्रुवं। संग्रामे संकटे घोरे भूतप्रेतादिके भये, दुःखदावाग्निसन्तप्त चेतसां दुःखभागिनां। श्रीशिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया। विभीषणाय रामेण प्रेम्णा दत्तं च यत्पुरा, कवचं कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः। गुह्यं तत्ते प्रवक्ष्यामि विशेषात् शृणु सुन्दरी। उद्यदादित्यसङ्काश मुदारभुजविक्रमं, कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं। श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम्, अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं। हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः। उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्, तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन, उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं। यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः, आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राजलिराञ्जनेयम्। ॐ नमो हनुमते सर्वग्रहान् भूतभविष्यवर्तमानान् समीपस्थान् सर्वकालदुष्टबुद्धीनुच्चाटय, परबलान् क्षोभय मम सर्वकार्याणि साधय साधय। ॐ ह्रां ह्रौं हुं फट् घे घे ॐ शिवसिद्धम्। ॐ ह्रां ॐ ह्रीं ॐ ह्रूं ॐ ह्रैं ॐ ह्रौं ॐ ह्रः स्वाहा। परकृत यन्त्र मंत्र तंत्र परापकार भूतप्रेत पिशाच दृष्टिशव, विघ्न दुर्जन चेष्टा कुविद्या सर्वोग्रभयानि। निवारय निवारय बन्ध बन्ध लुण्ठ लुण्ठ विलुञ्च विलुञ्च किलि किलि किलि। सर्वकुयन्त्राणि दुष्टवाचं हुं फट् स्वाहा। ॐ अस्य श्रीहनुमत्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्रीहनुमान् परमात्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः। मारुतात्मज इति बीजम् अञ्जनासूनुरिति शक्तिः, लक्ष्मणप्राणदायेति कीलकम्। रामदूतायेत् शस्त्रम् हनुमान् देवता इति कवचं, पिङ्गाक्षोमितविक्रम इति मन्त्रः। श्रीरामचन्द्रप्रेरणया रामचन्द्रप्रीत्यर्थं मम सकलकामनासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। अथ अङ्गुलिन्यासः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं वायुपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः ब्रह्मास्त्रनिवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं रामदूताय शिखायै वसट्। ॐ ह्रैं वायुपुत्राय कवचाय हुं। ॐ ह्रौं अग्निगर्भाय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः ब्रह्मास्त्रनिवारणाय अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः।
अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीययज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्कं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेदेवं विधेमं प्लगकुलपतिं गोस्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं चाकृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखां भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। अथ मन्त्रः ॐ नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरण परोच्चाटन कुमारब्रह्मचर्यगम्भीरशब्दोदाय ह्रीं सर्वदुष्टग्रहनिवारणाय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते एहि 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 सर्वग्रहभूतानां शाकनीडाकनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर ब्रह्मराक्षस पिशाचछेदनक्रिया विष्णुज्वर महेश्वरज्वरान् छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्मराक्षसकुलप्रबल नागकुलविषं निर्विषं कुरु झटिति झटिति। ॐ ह्रीं फट् घे घे स्वाहा। ॐ नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि हनुमते को आज्ञाफुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वतः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लगवेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेष्ठः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः
स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात्। मध्यरात्रौ जले स्थित्वा 7 वारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादितापत्रयनिवारणम्। अश्वत्थमूले अर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयं तथा। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगतां सुदार्ढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदां शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं। लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्। यः करे धारयेन्नित्यं स पुमान् श्रियमापुनुयात्। स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः तत्क्षणान् मुक्तिमाप्नोति निगडात्तु तथैव च। ईश्वर उवाच भान्बिन्दोश्चरणारविन्दयुगलं कौपीनमौञ्जीधरं काञ्चीश्रोणिधरं दुकूलवसनं यज्ञोपवीताजिनं हस्ताभ्यां धृतपुस्तकं च विलसद्धारावलिं कुण्डलं यश्चालं विशिखं प्रसन्नवदनं श्रीवायुपुत्रं भजे। यो वारान्निधिमल्पपल्बलमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोकतापहरणो वैकुण्ठभक्तप्रियः। अक्षाद्यार्जितराक्षसेश्वरमहादोषहारीरणे सोऽयं वानरपुङ्गवोऽवतु सदा योऽस्मान् समीरात्मजः। वज्राङ्गं पिङ्गनेत्रं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारं प्रहरणसुवशीभूतरक्षोधिनाथम् उद्यल्लङ्गूलसप्तप्रचलचलधरं भीममूर्तिं कपीन्द्रं ध्यायेत्तं रामचन्द्रं भ्रमरदृढकरं सत्त्वसारं प्रसन्नं। वज्राङ्गं पिङ्गनेत्रं कनकमयलसत्कुण्डलैः शोभनीयं सर्वापीड्यादिनाथं करतलविधृतं पूर्णकुम्भं दृढं वा भक्तानामिष्टकारं विदधाति च सदा सुप्रसन्नं हरासं। त्रैलोक्यत्रातुकामं सकलभुवि गतं रामदूतं नमामि। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं च शृङ्खलहारकण्ठं दधानामाच्छाद्य सुपर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमण्डलं दिव्यदेहकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। विवादे दिव्यकाले च दूते राजकुले रणे 10 वारं पठेद्रात्रौ मिताहारो जितेन्द्रियः। विजयं लभते लोके मानवेषु नरेषु च भूते प्रेते महादुर्गे अरण्ये सागरसम्प्लवे। सिंहव्याघ्रभये चोग्रे शरशस्त्रास्त्रपातने शृङ्खलाबन्धने चैव कारागृहनियन्त्रणे। कोपे स्तम्भे वह्निचक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारुणे। शोके महारणे चैव ब्रह्मग्रहनिवारणं। सर्वदा तु पठेन्नित्यं जयमाप्नोति निश्चितं।
भूर्जे वा वसने रक्ते क्षौमे वा ताल्लपत्रके त्रिगन्धिना वामस्या वा विलिख्य धारयेन्नरः पञ्चसप्ततिलोहैर्वा गोपितः सर्वतः शुभं करे कट्यां बाहुमूले कण्ठे शिरसि धारितं सर्वान् कामान् अवाप्नोति सत्यं श्रीरामभाषितम् अपराजितनमस्तेस्तु नमस्ते रामपूजितं प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा इत्युक्त्वा यो भजेद्ग्रामं देशं तीर्थान्तरं रणम् आगमिष्यति शीघ्रं च क्षेमरूपो गृहं पुनः इति वदति विशेषाद्राघवे राक्षसेन्द्रः प्रमुदितवरचित्तो रावणस्यानुजो हि रघुवरपदपद्मं वन्दयामास भूयः कुलसहितकृतार्थः सर्वदं मन्यमानः तं वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धबुद्धिं शरमप्रदं सुरमुनीन्द्रनुतं कपीन्द्रं कृष्णत्वचं कनकपिङ्गजटाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनां य इदं प्रातरुत्थाय पठेत् कवचं सदा आयुरारोग्यसन्तानैस्तस्य स्तभ्यः स्तवो भवेत् एवं गिरीन्द्रजे श्रीमद् हनुमत्कवचं शुभं त्वया पृष्टं मया प्रीत्या विस्तराद्विनिवेदितं श्रीरामदास उवाच एवं शिवमुखात् श्रुत्वा पार्वती कवचं शुभं हनुमतः सदा भक्त्या पपाठ तन्मनाः सदा एवं शिष्य त्वयाप्यत्र यथा पृष्टं तथा मया हनुमत्कवचं चेदं तवाग्रे विनिवेदितम् इदं पूर्वं पठित्वा तु रामस्य कवचं ततः पठनीयं नरैर्भक्त्या नैकमेव पठेत् कदा हनुमत्कवचं चात्र श्रीरामकवचं विना ये पठन्ति नराश्चात्र पठनं तद्वृथा भवेत् तस्मात् सर्वैः पठनीयं सर्वदा कवचद्वयं रामस्य वायुपुत्रस्य सद्भक्तैश्च विशेषतः श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गत श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकाण्डे त्रयोदश सर्गातर्गतं श्रीहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। श्री हनुमान जन्मोत्सव पूर्णिमा के दिन और शुभ इस अवसर पर आप इस स्तोत्र को पढ़ें, आपके सब संकट दूर होंगे, संपूर्ण कार्य भी सिद्ध होंगे। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।